बहुत ज़्यादा हो गया क्या? Please. So my question is that you said about money. So how much money is required, sir? I can tell you how much money I require. Please have a seat. Please have a seat. So but different people have different requirements. Absolutely. Please have a seat. My present plan is that I hope to do a PhD in philosophy from a good university abroad and then teach. That is my present plan. I don't know whether it will work out or not. How much money is required? That much amount of money which lets you lead a comfortable life and you're not perpetually on the wheel. If I stay back in India, my plan is I will retire to the hills and I will only work 4 months a year. And I will not let my lifestyle exceed that much amount of money which I can earn in 4 months. 4 months में अगर मैंने 40 लाख कमा लिया तो 40 लाख is my budget. 4 months में अगर मैंने सिर्फ 10 लाख कमाए तो 10 लाख is my budget. So I am taking money out of the equation. I am bringing it time. I want to have more time for myself, for my family. I don't want to be part of this rut. That is my choice. But can I give you a number? No. And that's where the mistake is. Don't live by numbers. मेरी height 6 feet है. I am extraordinarily handsome. मेरी सैलरी 6 लाख रुपया महीना है. That's pretty awesome. ये क्या है? ये numbers हैं. आप आज जाके 50,000 रुपए का एक आईफोन खरीदेंगे, आपको बेवकूफ बनाने के लिए 6 महीने बाद एक नया उसका 7S, 8S या कोई और एक ऐसा आ जाएगा. How much will you consume? Tell me this. Today, when I started, I had my dad's old car, Centro. Then I upgraded to a Volkswagen. अभी अगर मैं चलता रहता तो अभी मेरे पास कोई और बड़ी गाड़ी होती, पर क्या उससे फायदा क्या होता? So this number game, I want you to think beyond it. Is money important? Absolutely yes. I'm the first person to tell you money is important. But money is important for what? So that you can lead a happy, dignified life. Not that you are in office from 9 to 9 और उसके बाद Monday से Friday तक आपकी बिल्कुल ऐसा हो रही है and then you're like, wow, weekend. ये किस तरीके की जिंदगी है यार? मतलब मुझे समझ में नहीं आता था लॉ फॉर्म में every Monday when I used to go, people would ask, what did you do on your weekend? I'm like यार 5 दिन बिल्कुल ऐसा कराई तो 2 दिन सोता था और क्या करता? No, but people would have story. Oh, we went clubbing and we went partying and we went to the mountains. I'm like यार मैं बहुत ही निहायती बोर आदमी हूँ, मैं ये सब क्यों नहीं कर पाता हूँ? And then I realized कि यार ये लोग Facebook पर है. मैं Facebook पे नहीं हूँ, मैं दूसरी स्पीशीज से हूँ. क्योंकि अगर आपको Facebook पे रहना है तो you need those cool pics, you need likes. और वो तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि आज मैं 8 घंटा तान कर सोया तो सेल्फी और you're not going to get the likes. But what is the problem? The problem is you are living for someone else's approval. That यहाँ पे एक कोई बहुत बड़ा waterfall है, क्या नाम है उसका? धुआंधार. कितने लोग Facebook पे यहाँ पे? सभी सबने वहाँ पे जाकर फोटो खिंचा के डाली होगी. That's not cool. Okay, sorry. मुझे लगा कि शायद that's considered cool. Okay, that's not cool. तो कुछ भी एक करके, I'm sure everybody, we are all so connected because of the internet that we must have done something for the likes and approval of the rest of the society. अब हम लोग अपने बचपन में चलते हैं. वो पहली बार जब आपने एक अच्छी नर्सरी राइम सुनाई थी, जब आपने 2 का टेबल सुनाया था, तब भी आप लाइक के लिए जी रहे थे. या आपके टीचर या आपके पेरेंट बोल देंगे शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया. जब आप वो पागलों के जैसे भागे थे कि ताकि आप रेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ जाए, तब भी आपने इसलिए किया था कि आपको किसी की लाइक मिल जाए. पहले आप रियल लाइफ में कर रहे थे, अब आप वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहे हैं. व्हाट हैज चेंज्ड? यू आर सबजुगेटिंग योरसेल्फ. दिस ब्यूटीफुल लाइफ ऑफ योर्स, दिस ह्यूमन एक्सिस्टेंस ऑफ योर्स, यू आर लेटिंग द एंटायर सोसाइटी ramrod you day in and day out. You're living for कितने comments आ गए, कितने likes आ गए और and what not. Is this seriously the best way to lead your life? I want you to ask yourself. Read about a concept called attention economy. I challenge this. This is an open challenge. आज हम लोग एक बुक उठाते हैं. बुक में क्या 3 पन्ने उठाते हैं. मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप लोगों में से
कोई भी नहीं वो 3 पेज बिना डिस्ट्रैक्ट किए हुए वो पढ़ पाएगा. That urge to check the status on Facebook or WhatsApp message, it has become such an integral part of who we are that our attention span has completely disappeared. It's a systemic assault on your intellect. People who are doing this are very sharp. Do you know the biggest tech czars in this world? Hear what I'm saying. The biggest tech czars in this world, people who run Google, Facebook and whatnot, they have barred technology in their own household. They do not let their kids become as addicted to technology as you guys are, because they know the downside. But as consumers, do you know that? Because what you consume will become your life. Am I the best person to talk to you? Absolutely not. I think I'm perhaps the worst person to talk to you about these issues. I will give you so many crazy ideas that by the time you walk in and by the time you walk out of the auditorium, you would be like, यार कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे. आज तो नहीं आना चाहिए. But the problem is there is no right person to talk to you about this. अगर मिस्टर अंबानी भी आकर आपको यहाँ पे बताएंगे तो आपको लगेगा यार इस आदमी ने इतना पैसा कमाया तो मुझे इसकी बात सुननी चाहिए. एक नोबेल लॉरियट यहाँ पर आके आपको बताएगा, आपको लगेगा कि यार इसने इतनी अपनी लाइफ में इतना नॉलेज एक्वायर किया, मुझे इसकी बात सुननी चाहिए. But these are not the reasons why you should listen to anyone on a subject as important as your own life. The only person who will tell you finally is yourself, or should tell you finally is yourself. In those dark moments when you are humiliated, when you are fighting for your survival, when you are fighting for your last bit of self-esteem, कोई आके आपको खड़ा नहीं करने वाला है. You have to do that for yourself. तो फिर क्यों किसी की बात सुन के अपनी जिंदगी लीड करनी? Lead the life that you want. If you don't want to be an engineer and you want to go to National School of Drama, have the courage to do that. If you want to be an engineer, then become the best possible engineer against all odds. Then let there be no excuses. यार मैं जबलपुर में था, छोटी जगह में था ना, इसलिए मैं इतना ही कर पाया. Bullshit. किसने बनाई ये limitations? कहाँ से आए हमारे अंदर? किसने हमको सिखा दिया कि तुम यही कर सकते हो? So here I am. I'm happily retired at 32. मेरी दाढ़ी देख के लगता होगा मैं 40 साल का हूँ, पर मैं 33 का ही हूँ. And I've already told you my story. There are some questions which will help us. My first question is, who are you? Can somebody answer this one? Who are you? Who are you, sir? Yeah. My idea is not to put you on the spot and embarrass you. Please be comfortable. One thing which is not part of this exercise is any kind of judgment. मैं बचपन से I hate bullies and I hate people who poke fun at anyone. So please don't do that. At least in my class, I have zero tolerance for such kind of behavior. Yeah, please. Who are you? Fantastic. Anything else? Sorry? That's all. Please have a seat. Thank you. What's your name, sir? Rahul. Rahul. Very nice to meet you, Rahul. Anybody who can tell me who they are? Anyone? Any teachers? Any students? Anyone? Go ahead, sir. Sir, a learner who has to learn forever. You want to learn forever, you're a learner. Okay, fantastic. Anybody else? Who are you? Do you know who are you? Yes. Good morning, sir. I am Abhi Gupta of class 12. I love to play football. My hobbies are singing. My great hobby is to drawing. Fantastic. I'm a person who who loves to learn new things and the creativity. Fantastic, Mr. Gupta. Please have a seat. Are you enjoying the session so far? You are? Somebody from this side. Who are you? Yes, ma'am, please. I have a similar dream for my daughter. I think that's a fantastic way to look at yourself. Anybody else? Who are you? Who are you? Yes, at the back. An optimist. You're an optimist. It's lovely to meet you. I'm by nature a pessimist.
एक्चुअली इन माई रिस्पेक्टफुल ओपिनियन ना, इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है. दिस इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन इज एम्ड एट. द क्वेश्चन इज एन एक्सरसाइज इन पीलिंग ऑफ लेयर्स. हु आर यू? आई एम अनुज पुरी. ये क्या है? ये नाम है, एक आइडेंटिटी टैग है. हु आर यू? आई एम अ लॉयर. दैट्स योर प्रोफेशन. इस सवाल को लेकर आप अपने अंदर जितना जाते जाएंगे ना, आपको पता चलता जाएगा कि आपने अपने ऊपर कितने मास्क और टैग्स लगाए हैं. Hopefully someday you will find a core which is really you. The day you do that, you will also realize all your fears, all your apprehensions, all the limitations, ये आपके नहीं थे. ये उन मुखौटों के थे, ये उन मास्क के थे, ये उन टैग्स के थे. Because in your heart of heart, you are not someone who is not good at maths. You are not someone who is scared of speaking in public. You're not someone who needs anyone's approval. ये आपको एक सोशल कंडीशनिंग ने बना दिया है. मेरे पास एक ये फोन है, इसको स्मार्टफोन कहते हैं. किसी ने इसमें बड़ी मेहनत करके कोड लिखा होगा कि ये ABC फंक्शन कर पाए. हमारे ऊपर जो मिला वो कोड लिखता गया. सड़क पे अंकल चिल्ला दिए कि अरे तुम सिगरेट पी रहे हो, मैं जाकर मेरे पापा को बता दूंगा. रात भर सोच के नींद नहीं आई, अरे पापा को पता चल गया. टीचर ने क्लास में सबके सामने बोल दिया, रात भर रोता रहा. बुरे नंबर आए, मम्मी पापा को बताने में डर लगा. मेरे ऊपर लोग कोड लिखते गए, मुझे पता भी नहीं चला, और एक दिन मैं बड़ा होकर एक इंसान बन गया. एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, इज दिस रियली हु आई एम, एंड इज दिस व्हाट आई वांट टू